भारत सरकार के आदेश पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI नाम की मोबाइल ऐप को हटा दिया गया। लखनऊ के मामले में जहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां को गोली मार दी। दावा यह है कि BGMI और PUBG में केवल नाम का ही फर्क है। How a 16-year-old teenager boy shot his mother dead over first as it appeared claiming addiction. वैसे ही मिशन, वैसा ही खून खराबा, गोलीबारी, बम धमाके और वैसा ही सनकी अपराधियों का गिरोह। There is of course a game addiction and a denial to play that made him angry, but that was not the only reason. Not the only reason. So, इंडिया का बैटल ग्राउंड्स तो इंडिया में बैन हो गया है। Now let's see कि ये बैन क्यों हुआ, what could be the ideology or the reason behind this, and गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। तो चलो थोड़ी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो ये सबको पता है कि BGMI बैन हो चुकी है। It's an online FPS shooter game and BGMI को बैन करने के पीछे जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रीज़न है वो है that is because of the Information Technology Act of 2000 under section 69A। तो इस सेक्शन के अंडर BGMI को बैन किया है and this section deals with the scenario जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को कोई एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा in the interest of sovereignty and integrity of the country, security of the state, friendly relations with foreign states or public order. So this is the reason that has been cited by the Indian government BGMI ban करने के पीछे। and PUBG भी ban हुआ था in September 2020 and now they are saying that BGMI is a carbon copy of PUBG, so इसलिए BGMI को भी ban कर दिया है। and as per me it is fine क्योंकि if there is enough proof, there is credible proof कि there is some impact to India's sovereignty or India's security of state, then definitely I stand with the country and I believe and I hope that everyone will stand with the country as well। क्योंकि अगर country की बात है, national security की बात है, then definitely go ahead and ban such apps which are siphoning data। but अगर ऐसा नहीं है और आपने ऐसी due diligence नहीं की, that's the biggest issue कि भैया आपने अपनी तरफ से due diligence करी। maybe did you check the source code, did you check कि वो डेटा कहाँ पे जा रहा है, whether it's being stored in India, whether it's being stored in China or some other country। वो चीज़ I don't think so कि वो चीज़ हुई है as per me। अगर आप लोगों को पता है तो do let me know in the comment section below, but I believe that it was a hasty decision। This is what I feel। the government could have done its due diligence। BGMI has been tailor made for Indian audience। जब PUBG बैन हुआ उसके बाद BGMI आया, yes हू बहू है, but it has been tailor made for Indian audience। and मेरे सुनने में आया, I'm not a software developer so don't quote me on this, but मेरे सुनने में ये आया है जो source code है वो change हो चुका है, the data retention, the data policies they've changed and सारे servers India में है। now if any of you know about this and have 100% proof कि ऐसा ही है, do let me know in the comment section below। let's discuss this। ठीक है, ये एक रीजन साइड किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि PUBG जैसी ऐप है, इट इज अ चाइनीज ऐप, ब्ला ब्ला ब्ला। देन what about other Chinese backed apps, right? Like Paytm, right? Paytm has Chinese investors। Chinese technology giant Alibaba owns over 40% stake in Paytm, right? Ola है, right? Swiggy हो गया, Snapdeal, Hike Messenger, Big Basket, Zomato, Oyo, Flipkart, right? MMT, ये सारी जो applications हैं they all have Chinese backers, right? so मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा that अगर this is the only reason, तो I believe this reason is not good enough यार, क्योंकि it is not good for a country's economical outlook according to me। मतलब business, कोई भी बाहर से कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी इंडिया में, they will always be concerned कि यार कहीं कल को हमें ना बैन कर दें, right? just because we are from so and so country। right? so I don't think so that this is a very good step। अब आप देखो जब demonetization हुई थी, Paytm ने ad निकाली with front page ad with Mr. Modi on the cover, right? कि भाई very nice, फलाना ढिमकाना, Paytm करो ये वो, and तब ये सारी due diligence कहाँ गई? so थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड, थोड़ी सी हिपोक्रेसी लगी मेरे को इस स्टेप में। if we talk about the next reason according to me, अभी हाल फिलहाल में there was this shocking incident in Lucknow where a teen attacked his mother
and that 16-year-old boy was accused of killing his mother. ये एक रीज़न है इसके पीछे कि भाई ऐसी एप्लीकेशंस दे incite violence या फिर ऑनलाइन FPS shooters दे incite violence. I don't know यार, ऐसे तो कितनी गेम्स हैं which have FPS dynamics. एक्शन मूवीज को ले लो यार, उसकी वजह से कितनी वायलेंस हो सकती है. अब सबको बैन करोगे क्या? देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले यार. मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेटेड इंसिडेंट आप एक स्पेसिफिक ऐप को टारगेट करो या आप एक स्पेसिफिक जॉनर को टारगेट करो गेमिंग को. इफ़ यू चेक न्यूज़ आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, and the family is saying something else. Now, this is an excerpt of the Q&A that took place between the child and the child rights body. He seems to be a pretty normal child. अब आप ये देखो ना कि family environment कैसा है, वो भी बहुत ज़रूरी है, right? You're overlooking this fact. You're just blaming it on PUBG. But जो family environment है, that also plays a huge role. जैसे कि ये question देखो, did your mother beat you? Yes, she beat me multiple times, and even at times when I was not at fault. Right? Did you get angry when your mother beat you? And yes, he used to get angry. Right? कोई reason नहीं है and your mother is beating you or she beat that child. तो of course यार, child में थोड़ी सी animosity या थोड़ा सा anger तो आएगा ही आएगा. फिर भी violence जो है, that is never the answer. मैं कभी support नहीं करता इसे. And is your father's behavior good? Yes, my father is good and I obey what he says. He was asked to choose between father and mother and he chose his father. Okay, bhai, I like my father more. Why did you kill your mother? She often used to stop me. Stop me from what? Come on, if you're reporting this, तो ढंग से report करो. Right, so ये सारा dialogue हुआ है between the child and the child rights body. And according to the child rights body, the child cannot kill the mother. This is the statement that they made. And according to the family, the police cooked up the PUBG story, right, to cover this entire charade up. The family members of the victim said they are not satisfied with the police investigation so far, and one of the members said that police have cooked up the entire PUBG theory and they had no other option but to accept what the police said, which is not good police work. One more story around this incident. Well, the family has also made the statement that they do not want to reveal the real reason behind this. Right, because that reason maybe is more painful than the incident itself. So this speaks a lot. क्या चल रहा है घर में, वो चीज़ें भी सोचो यार. बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, how is the environment at home, whatever that happens behind closed doors, किसी को नहीं पता. And you just blamed it on PUBG, and that became a whole hue and cry to ban BGMI, to ban PUBG. This was one more article that I came across while I was researching this whole incident. जो ये publication है, they've put it very well कि यार, it is not just about games, right? कि violent games make violent children. That is not the thing. सिर्फ वो एक, that is not the only agenda or that is not the only condition that makes children violent. तो ये एक study है जो psychologists और इस पब्लिकेशन ने मेंशन किया है. एंड बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज दैट इट बेसिकली सेज दैट वायलेंट वीडियो गेम्स इंक्रीज्ड adolescent aggression, but that healthy normal views and beliefs about aggression and a healthy family environment regulated this and reduced their aggression, right? But if the child has already or was already in a troubled environment or witnessed violence at home or was a victim of abuse or neglect, this may lead to them becoming aggressive or violent. And the kid used to say that bhai mere ko maarte the. Another news outlet, the Indian Express, stated that on Sunday evening the mother and son had an argument after some money went missing, right? She accused him of stealing the money, which was found later. He felt that he had been unfairly accused. He was already unhappy with his mother for stopping him from using the mobile phone to play games, and he did what he did, right? So आप देख सकते हो that there's this clear trend कि उस बच्चे को ब्लेम किया जा रहा है, उस बच्चे को बीट किया जा रहा है. द फैमिली इन्वायरमेंट, द होम इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट. तो यार, कुछ ना कुछ तो अग्रेशन आएगा बच्चे में, राइट? सो इट्स नॉट ओनली द गेम अकॉर्डिंग टू मी. नाउ आई एम नॉट अ चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट. ठीक है, होम इन्वायरमेंट है, ये है, वो है, बट व्हाट अबाउट स्टडीज? व्हाट अबाउट what's going on in school, the amount of competition that children have to face these days? That adds more to the stress यार. इतना सारा कंपटीशन है, 24 घंटे पढ़ते रहो, या यू आर इन अ रैट रेस, यू आर रनिंग कि भाई मेरे को अच्छा रैंक मिल जाए, मेरे को अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए. तो
मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं बात करता अपने देश में, राइट? इट्स अ टैबू व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड की मेंटल हेल्थ, मेन वुमेन की मेंटल हेल्थ, वेदर यू आर हैप्पी, nobody focuses on happiness in our country, है ना? मतलब everyone is focused on money, everyone is focused on goals कि भाई ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, बट nobody is concerned or focused on happiness. हमारे देश में mental health, happiness, these are all taboo topics, right? कोई इसके बारे में बात नहीं करता. एनीवे मूविंग ऑन, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस. जो तीसरा जो रीज़न है मेरे हिसाब से कि भाई इन ऐप परचेजेस हैं, छोटे बच्चे ये गेमें खेलते हैं, टीन्स ये गेम्स खेलते हैं, एंड दे गेट कोर्स्ड इनटू बाइंग इन ऐप परचेजेस, या गैम्बलिंग हो गई, या लूट बॉक्सेस हो गए, माइक्रो ट्रांजैक्शंस हो गए. दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड. माइक्रो ट्रांजैक्शंस एंड ये लूट बॉक्सेस एंड ये गैम्बलिंग वाला जो एस्पेक्ट है इन गेमिंग, दैट इज, आई डू नॉट स्टैंड बिहाइंड दैट एंड आई हेट इट. EA Sports, I'm talking about you. But ऐसी कितनी applications हैं यार which are pay to win, which have gambling inbuilt. Ace 1 2 3 रम्मी वाली games हो गई, Winzo, Shinzo, पता नहीं कितनी कितनी games आई हुई हैं where you are betting on money. So gambling हो गया, micro transactions हो गए. There are so many other apps and games यार. FIFA को देख लो. European countries have already joined the fight against loot boxes. EA को penalty भी हुई European Union में. And Raid Shadow Legends, FIFA 22, Star Wars Battlefront 2, इनमें loot boxes, in-game purchases बहुत हैं. द प्रॉब्लम इज जो रियल वर्ल्ड जो करेंसी है दैट इज मास्क्ड अंडर मल्टीपल वर्चुअल करेंसीज के पहले $100 दे के ये वाली करेंसी खरीदो, फिर इस करेंसी से कॉइन्स मिलेंगे, फिर कॉइन्स से यू विल बाय इन गेम स्टफ, राइट? तो बड़ा डिसेप्टिव डिजाइन है फॉर दीज पे टू विन गेम्स एंड पे टू विन एप्लीकेशंस. सो सिर्फ BGMI is not the only one with betting or in-app purchases or children getting addicted. There are so many other games. उन पे भी इनको स्क्रूटनी करनी चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन में हुई है वैसे होनी चाहिए, एंड ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए. बेसिकली दैट्स द थिंग. सो मोबाइल गेम्स की बात करें, डायब्लो इमॉर्टल, रियल रेसिंग 3, क्लैश ऑफ क्लैंस, कितनी गेम्स हैं वेयर यू नीड टू परचेज इन गेम करेंसीज. सो BGMI इज नॉट द ओनली वन. अब अंत में फोक्स मैं यही कहूँगा कि जो BGMI है इट्स अ ह्यूज नेम इन दी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, राइट? इंडिया को मैप पे लाई है इन दी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. बहुत बड़े प्राइज पूल्स हैं, ESPN, स्काई स्पोर्ट्स, मेजर चैनल्स दे कवर दीज टूर्नामेंट्स, करोड़ों के प्राइज पूल्स हैं. एंड विद दिस स्टेप maybe e-sports industry and that e-sports scenario in our country will get hit. ठीक है, if BGMI is the next iteration of PUBG या उसकी कॉपी है, तो आप बैठो डेवलपर्स के साथ, लुक एट द सोर्स कोड, लुक एट द डेटा रिटेंशन पॉलिसीज, डेटा स्टोरेज पॉलिसीज, एंड आफ्टर डूइंग द ड्यू डिलिजेंस अगर कुछ झोल झाल लगे तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बैन दिस एप्लीकेशन एंड दिस गेम. रही बात लखनऊ टाइप के इंसिडेंट्स की, सी इट्स नॉट ओनली द गेम, राइट? कितना मीडिया है विच कैन इन्फ्लुएंस यंग माइंड्स, विच कैन इन्फ्लुएंस यंग पीपल. तो या तो सब पे एक्ट करो या फिर एक सिंगल गेम पे मत एक्ट करो. एंड जो थर्ड बात है, बेटिंग, इन ऐप परचेजेस एंड चिल्ड्रन गेटिंग एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दिस. सो भाई बहुत एप्लीकेशंस हैं, एस 2 3, विंजो, रम्मी, फलाना ढिमकाना, AAA टाइटल्स हैं, मोबाइल गेम्स हैं which I named earlier which have this kind of mechanics. So I believe it's a bit harsh. ये थोड़ा hasty step लिया है गवर्नमेंट ने, and I hope this can be resolved soon. मैं खुद BGMI नहीं खेलता, I'm not a mobile gamer, I'm not a fan of BGMI, but what's wrong is wrong. And पता नहीं आजकल इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है, राइट? इंडियन गवर्नमेंट ने VPNs में भी अपनी दखल अंदाजी की है. VPN इज़ नॉट सिक्योर एनी मोर, इट्स नॉट, देयर इज़ नो मोर प्राइवेसी व्हेन इट कम्स टू VPN. मतलब जो पूरा पर्पज़ है VPN का वो ही डिफीट कर दिया. मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है. आप VPN प्रोवाइडर्स को तंग कर रहे हो, आप गेमर्स को तंग कर रहे हो, गेमिंग कम्युनिटी को तंग कर रहे हो, योर माइक्रो मैनेजिंग स्टफ. लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस रखो ना यार, तो वो चीज़ अजीब लगती है. So yeah, that's it for this video. मतलब जो रैशनल था BGMI के बैन होने का वो I wanted to discuss and थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था उस पर. Do let me know your thoughts in the comment section below. Thank you so much for your time. Do subscribe. Bye bye.